topic for today. This is the new topic which I have already discussed even, but I want to discuss a little bit detail so that you people can be able to understand what I'm talking about. This is, we have recording transactions in general. I used to say the word whenever we say the general, we call it double entry also. ठीक है, हम general को double entry क्यों कहते हैं? Because accounting आपको ये concept देता है कि आपको हर ट्रांजेक्शन को ट्वाइस रिकॉर्ड करना है. यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हाट इज डेबिटेड, यू मस्ट हैव टू रिकॉर्ड व्हाट इज क्रेडिटेड. For this we have exploring the real world around of the business. We have two businessmen, we have taking their history now. But what happened, we have to think about the first of all your accounting cycle. This is your first side of the accounting cycle. We need to plan for the accounting cycle. First of all, we must have different transaction. Then we have some source document from where these transactions come from. We must consider our accounting year. Accounting year can be your calendar year or your fiscal year. Okay, calendar year or fiscal year किसे कहते हैं? Any 12 months it's your accounting year. अब वो January to December भी हो सकते हैं, वो June till next year का July भी हो सकता है. 12 आपके working months होने चाहिए. Then we have key terms over here like accounting cycle. We have some source document. We have invoice कहते हैं आपकी कोई भी रसीद. Then we have another receipt. एक हम sales के लिए यूज करते हैं, एक आप purchase के लिए यूज करते हैं. We have some memorandum in which we have details of the business. Then we talk about some check stub, like we are totaling the debit and credited side. We have some generalizing concept that your debit should be equal to your credited. Then I discussed with you the calendar year and the fiscal year. This is your accounting cycle. It is the most important point which I want to discuss over here. First of all, we have number one step. We have invoice, receipt and memorandum in which we have some transaction. ठीक है, यहाँ पे transaction आपकी start होगी जब भी आपका buyer और seller involve हो जाएगा. As your buyer and seller involve, you have your you can say जर्नल एंड लेजर. ठीक है, आपने उसको डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है. यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीविंग एन इनवॉइस. आफ्टर रिसीविंग इनवॉइस यू आर एनालाइजिंग योर ट्रांजेक्शन. ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब बायर्स एंड सेलर्स जिसमें आपके पास आ चुके हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस आ गया है. देन आफ्टर दिस प्रोसेस यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इनटू जनरल. ठीक है, एंड देन जनरल पोस्ट टू योर लेजर अकाउंट. दिस इज योर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर टी अकाउंट. ठीक है, मेरी क्लास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रहा है. आई विल गो फर्दर फास्टर लिटिल बिट. फर्स्ट स्टेप invoice, then transaction, then we have generalizing. The fourth one we have ledger, or we call it T account. Then fifth one we have trial balance. Then sixth we have to prepare some worksheets in which we record these transactions. Then we have income statement and balance sheet. Then we have again adjusted trial balance and post closing trial balance. Okay, we call it income statement balance sheet. It's called financial statement also. Okay, so these are the step of the accounting cycle which you people have already done before. You can take the screenshot. Then these are the steps in which they are showing you that what actually an invoice is. List of specific information about a transaction involving buying and selling. जब भी आप इनवॉइस की बात करते हैं तो इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होते हैं? डेट है बेटे आपके पास, डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्वांटिटी है, पर यूनिट प्राइस क्या होती है, और फिर आप उसकी टोटल प्राइस निकालते हैं जिसको आप एक रिसिप्ट या इनवॉइस इसे ही कहते हैं. टॉप पे आपकी कंपनी का नाम होगा जो कंपनी आपको इनवॉइस इशू कर रही होगी. देन हम स्पेसिफिक कस्टमर का नाम मेंशन करते हैं, डेट, उसका ऑर्डर नंबर या इनवॉइस नंबर, शिप नंबर, वो उसकी शिपिंग डेट क्या है, कितने डेज में आपका जो है शिपमेंट हो जाएगी, वो भी मेंशन करते हैं. ठीक है, ये आपकी इनवॉइस की पिक्चर है जो आके आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. ठीक है, then we have receipt from the side of a record of cash received by the business. It can be in the form of your any receipt form which you are giving, or it can be you're giving by check also. It indicates the date of the payment, the name of the person to whom it is paying. You can see the picture here that they are mentioning the name of the person received from. Then here they have mentioned the amount. There is a signature. The date is also mentioned. So this is the very clear picture of the receipt in which the amount is also mentioned, person name, and who is the payer or the payee. ठीक है,
Then we have memorandum, in which we have a description, a brief description about the transaction which is going on. We often used to write no source document exists for the business transaction. Here we have to, from, date and subject, and the important content कि इस वक्त हमारी जो बात करने का मेन एसेंस है वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं. ठीक है, बेसिकली इट्स अ ब्रीफ रिटन मैसेज दैट डिस्क्राइब्स अ ट्रांजेक्शन, कि इस वक्त हमारे बिजनेस के जो बायर्स और सेलर्स हैं वो इस वक्त करंटली क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसको हम मेंशन करते हैं. ठीक है, मेमो को कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए भी या बिफोर द मीटिंग्स भी हम मेमो शेयर कर रहे होते हैं. Now I proceed towards the check stub. This is all your debit and credit checking. The key points is we have to keep these receipts and payments with us so that we can check our document for the future resources. These are all your accounting steps for the accounting cycle. This is all for the accounting cycle. I will show you the accounting cycle once again. So here we have, this is all for the accounting cycle. Thank you so much.